So first thing and our first concept lecture on first trimester screening as it was requested by many. So first trimester screening is not a recent concept. We have been working on this since 1990s or maybe prior to that also. But now it has become the talk of town because of, you must have heard about a case where an obstetrician was sued as she did all the tests in her own might and wake, but there were some undetected aneuploidic like stigmata or whatever. I think it was a case of Down syndrome. And patients and her attendants were very furious over the obstetricians. So to avoid those things, we have to clear our concept as what we are offering first and foremost. And if we are offering, what is the next step? So let us understand what we have to offer. So first trimester screening, what is that? Why we should screen? It is a part of prenatal diagnosis because aneuploidy accounts for more than 50% first trimester abortions, 20% second trimester losses, 6 to 8% stillbirth, and 6 to 7% of early neonatal deaths. And I don't have data about litigation. It might be quite more. Sometimes, according to as compared to the background congenital defect risk, it is 2 to 4%. And we have newborns with crippling congenital defects. So our aim is to screen all such things, give an accurate short and long-term prognosis, tell them about the recurrence risk and potential therapy options. Because we have to optimize all our obstetric outcomes. Now, what to screen? We know we can screen for structural defects, like fetus is forming, so there might be some structural defects, like cardiac anomalies, commonest one, and neural tube defects. Second is chromosomal defects, which may be a defect of number, like aneuploidy, polyploidy, and monosomy. It may be having missing like chromosomes. Then we can screen for gene defects like missing genes, extra genes, duplicated genes, inversions, or translocation in the arrangement of genes. We may screen for metabolic defects, that's a different story, but altogether we screen for one, structural defects, second, chromosomal defects, third, genetic defects, and fourth, metabolic defects. So this is a picture which is showing not mine. So it has been taken because our library is yet to form. So these are some of the structural anomalies that can be detected on ultrasound. So what are the common structural defects that we can screen for? So commonest is cardiac malformation, and we should actually be looking for the cardiac anatomy while we are doing level 2 scan. We can screen for neural tube defects like spina bifida and anencephaly, meningocele, meningomyelocele. Now, there are some non-lethal defects like syndactyly, polydactyly, but nonetheless, if detected, it should be reported. It is done by ultrasound, and anencephaly, interestingly, can be picked up in first trimester as early as 10 weeks. So, structural defects picking up and screening can start from 10 weeks itself. There are certain soft markers on ultrasound which can be picked up and which are markers of certain chromosomal aneuploidies, associated defects like congenital cardiac defects, and so many other stigmata which we'll be learning in subsequent presentation. So what are these soft markers? Soft markers mean markers of some syndrome or sequelae which can be picked up on ultrasound. So very first marker is nuchal translucency. Second is nasal bone. Third is tricuspid regurgitation, if we see on ultrasound as early as first trimester ultrasound, and ductus venosus velocimetry. So let's come to chromosomes now. Chromosomal defects, what are the chromosomal defects? See, structural defects ultrasound पे ज़्यादा पता चलते हैं.
एंड स्ट्रक्चरल डिफेक्ट जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो वी कैन सी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, कॉन्जेनाइटल कार्डियक एनोमलीज, नॉन फॉर्मेशन ऑफ हेड, देन लिम्ब डिफेक्ट्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स. बट अल्ट्रासाउंड पे ही हमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट के मार्कर्स भी पता चल जाते हैं. दोज आर न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी, nasal bone, maxillofacial angle. So there are so many things, and those are known as soft markers. So what actually are these chromosomal defects? So chromosomal defects can occur with a frequency of around 4 in 1000 births. So it is not that rare also. All chromosomal defect can occur in 1 in 150 pregnancies, and that's the data provided by SUG in 2020. एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? इट इज अ न्यूमेरिकल चेंज इन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. न्यूमेरिकल चेंज, कुछ भी चेंज हो गया. पॉलीप्लॉइडी क्या है? न्यूमेरिकल चेंज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम. सो एन्यूप्लॉइडी एक क्रोमोसोम का डिफेक्ट है, पॉलीप्लॉइडी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का डिफेक्ट है. सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सो यू सी एन्यूप्लॉइडी, दो तरह के क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स. सो ऑटोसोम्स में भी एन्यूप्लॉइडी हो सकती है और सेक्स क्रोमोसोम में भी डिफेक्ट हो सकता है. सो ऑटोसोम्स में सबसे पहला एंड कॉमनेस्ट इज ट्राइसोमी 21, which we very famously know by the name of Down syndrome, and it was reported by Langdon Down. Under his name we remember this syndrome. Second commonest defect is trisomy 18, which is known as Edwards syndrome. Trisomy 13, which is known as Patau syndrome. Sex chromosomal defect are 2n-1, which becomes monosomy X. एक जो डबल एक्स है उसमें से एक माइनस हो गया सेक्स क्रोमोसोम, तो सिंगल एक्स क्रोमोसोम बचा, उसको हम मोनोसोमी एक्स कहते हैं. And this is for your homework. What do we know this syndrome as? Very easy one. Then सेक्स क्रोमोसोम का ड्यूप्लीकेशन एक्स वाई और वाई डुप्लीकेट हो गया, उसको क्लाइनफेल्टर्स बोलते हैं. अदरवाइज दो एक्स सिंड्रोम है और उसका डुप्लीकेशन हो गया, इसको ट्रिपल एक्स सिंड्रोम बोलते हैं. नाउ कमिंग टू पॉलीप्लॉइडी. व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी? इट इज ट्रीप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी. सो ट्रीप्लॉइडी में एंटायर सेट ऑफ chromosomes has triploid and entire set of chromosomes has tetraploid. So ploidy means change in the entire set of chromosome, and aneuploidy means like ऑटोसोम या सेक्स क्रोमोसोम के किसी एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम में प्रॉब्लम था. So what are the genetic defects? So chromosomal defect, I'm sure you all must be clear now. They are aneuploidies and polyploidies. Genetic defect में miss हो सकता है, one gene may be missing, one gene may be extra, one may be duplicated, one may be deleted. There might be micro deletion of a portion of gene. There might be inversions and translocations of the set of genes or single gene. So let us assume that entire karyotype of humans is a library. So this particular analogy, it is not mine. I have also learned it from some big one. So karyotype में जैसे हमारे कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? You can write in chat box. So वो set of chromosome इधर आ गया, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम का. We are seeing this. So when we order karyotype, we're actually looking at the total number of chromosomes. When we want to see for certain chromosome कि कौन से chromosomes missing है, जैसे aneuploidy हो गई है, तो उसमें हम मान लीजिए डाउन सिंड्रोम का देखते हैं, तो वी आर अमंग्स दिस बुक विच आर इन द लाइब्रेरी, हम एक बुक को देखना लगते हैं कि ये बुक है लाइब्रेरी में कि नहीं है. सो देयर वी डू क्रोमोसोमल टेस्टिंग. व्हेन वी लुक एट दैट बुक एंड उस बुक में हम देख रहे हैं कि पेज नंबर 124 है कि नहीं है उस बुक में जिसमें कि क्लाइमेक्स दिया हुआ है, देन वी आर लुकिंग फॉर जीन, a particular gene, then set of gene, and when we see कि उस set of gene में वो word दिया है कि नहीं दिया है कि किसने मर्डर किया, so then we are looking for single gene defect. And then sequences can also be seen कि ये जो gene sequences जिसमें कि translocation या inversion हुआ है, for that particular problem we see gene sequencing. So I hope we are clear. So somebody has written in the chat box,
23 पेयर्स होते हैं और टोटल नंबर क्या होता है हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स का? इट इज 46 XX और 46 XY. I deserved a better answer. So 46 XX और 46 XY we are seeing. आपने किसी का कैरियोटाइप ऑर्डर किया तो आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि 46 XX या 46 XY है कि नहीं है। ये सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम का पूरा है कि नहीं। देन जैसे डाउन सिंड्रोम है ट्राइसोमी 21, तो आप 21st नंबर के क्रोमोसोम का एन्यूप्लॉइडी देखना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब आप इस पूरी लाइब्रेरी में से आपने एक बुक उठा ली और आप उसको देखना चाह रहे हैं। देन जीन, जितने भी डिफेक्टिव जीन सीक्वेंसेस हैं, जो भी जीन्स हैं, देन यू आर लुकिंग फॉर वन पेज, पर्टिकुलर पेज और पैराग्राफ इन दैट बुक। उस पेज या पैराग्राफ में अगर आपको कोई सिंगल जीन डिसऑर्डर, एंड देयर कम्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिंगल जीन डिसऑर्डर कॉमनली हम देखते हैं विच इज मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो, नाउ यूनिवर्सल स्क्रीनिंग फॉर दैट सिंगल जीन डिफेक्ट इज ऑल्सो रिकमेंडेड। तो वो हम सिंगल जीन देख रहे हैं। एंड देन फॉर ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन, दी सीक्वेंसेस आर दी सीक्वेंस्ड राइटली। सो इसमें क्या हुआ, कैरियोटाइप में आपको एन्यूप्लॉइडी भी पता चल सकती है, एंड आई टेल यू व्हाट वे। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग एसेंशियली जब हम करते हैं तो वी आर डूइंग फॉर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स, वी आर डूइंग इट फॉर डिटेक्टिंग न्यूमेरिकल डिफेक्ट, we are doing it for detecting aneuploidies, and we are doing it most commonly for Down's syndrome because it comprises almost 50% of the total cases of chromosomal aneuploidies. Trisomy 18, 15%, and trisomy 13 is least in occurrence, and it is around 5%. Sex chromosome defects account for 11 to 12% of the total chromosomal defects that we encounter during pregnancy. Now coming how to screen. So we can do analyte-based testing, which is also known as conventional or traditional testing, or we can use cell-free DNA. And I'm sure you all must be knowing the name of this test, cell-free DNA. इसको क्या बोलते हैं? You can write in chat box. So question to the learners over here is, what is first trimester aneuploidy screening? And options are free beta HCG and plasma associated placental protein A, HCG, PAP-A, nasal bone nuchal translucency, SCG, PAP-A, NBNT plus mother's age, HCG, PAP-A, NT plus age. I'll take a pause of 3 seconds over here so that you can write your answers. So first answer that we got is 3, that is HCG, PAP-A, NBNT plus age. Then 2 and 4 also. Ab to 1 hi bacha. So 2 is HCG, PAP-A, NB plus NT, and 4th is HCG, PAP-A, NT plus H. So actually, first trimester aneuploidy screening, the correct answer is option 4. So we go for HCG, PAP-A, nuchal translucency plus maternal age. So this is an important concept. We do everything. We do everything. We do TR, we do TB, we do other soft markers. But the standard testing, combined testing is HCG, PAP-A, NT plus H. So what is analyte or conventional or traditional screening? Basically, पहले हमें screening समझना होगा उसके लिए. So screening test should be sensitive, right? कि sensitive है. Sensitivity का मतलब है कि it is detecting the number of aneuploid fetus identified, right? और हमें स्क्रीनिंग टेस्ट की सेंसिटिविटी बहुत हाई चाहिए कि जब हम स्क्रीन कर रहे हैं तो जो भी एन्यूप्लॉइड फीटस हो हम उनको आइडेंटिफाई करें। दूसरा जो हमारा रिक्वायरमेंट है
वो है कि उसका फॉल्स नेगेटिव डिटेक्शन रेट, यानी कि वो एन्यूप्लॉयड फीटस जो हमने स्क्रीनिंग में मिस कर दिए वो हमें बहुत कम चाहिए, तभी वो एक अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट बनेगा। यानी कि वो स्क्रीन कर रहा है एन्यूप्लॉयडिक फीटस और वो मिस भी नहीं कर रहा है कि कौन एन्यूप्लॉयडिक फीटस नहीं है। फॉल्स पॉजिटिव क्या हुआ? अनइफेक्टेड प्रेगनेंसी जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मतलब फीटस एन्यूप्लॉयड नहीं है लेकिन उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट का जो अभी तक थे उनका कांस्टेंट था एंड दैट रेट वाज 5%। यानी कि आप जितने भी टेस्ट कर रहे हैं लगभग 5% टेस्ट रिजल्ट जो है वो फॉल्स पॉजिटिव आएंगे। यानी कि एक अच्छा चंक ऑफ टेस्ट रिजल्ट ऐसे लोगों का आएगा जिनका फीटस तो नॉर्मल है बट उनका स्क्रीन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो ये हमें नहीं चाहिए था और हमें किसी तरह से कम करना है जितना हम कम कर सकते हैं। सो ये बड़ी एक वरीसम और ट्रबलसम बात थी जो अभी काफी हद तक रिजॉल्व हो गई। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव स्क्रीन विद एक्चुअली एन्यूप्लॉयडिक फीटस, और इसको हम 1:2 समथिंग और परसेंटेज में डिटेक्ट करते हैं। यानी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या हो कि जो टेस्ट हमने किया उसकी जो पॉजिटिव स्क्रीन आई और एक्चुअली एन्यूप्लॉयडिक फीटस का एक हम रिस्क एस्टिमेट बता देते हैं रेशियो में या परसेंटेज में। सो फॉर अस राइट नाउ द स्क्रीनिंग इज मैटरनल एज, nuchal translucency, beta SCG, and PAP-A. Based on this, we do combined screening and give the result to patient as low risk or high risk. We never give a result as negative or positive. So first is maternal age. इसके क्या importance है? It is actually a soft marker. जितनी ज्यादा maternal age है आप मान के चलो उतना ज्यादा रिस्क ऑफ fetal aneuploidy होगा. It is directly proportional to maternal age. So we can very conveniently think that a mother who is getting pregnant at 20 vis-a-vis a mother who is getting pregnant at 40, the risk of aneuploidy is obviously higher in a mother who is having age of 40. One thing, sex chromosomal abnormalities, maybe monosomy or triploidy, are unrelated to maternal age. तो अगर टर्नर सिंड्रोम टाइप की कोई चीज है या ट्रिप्लॉइडीज जो हम मोलर प्रेगनेंसी में देखते हैं उनका मैटरनल एज से कोई रिलेशन नहीं। सो सेक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटीज आर unrelated to maternal age and it can happen even with the youngest of pregnancies. So maternal age को हम अकेले अगर मार्कर लेके चलें तो वो सिर्फ और सिर्फ 30% सेंसिटिव है, और अगर हम इसको उल्टा बोलें तो मैटरनल एज अलोन इज एज हाई एज 30% सेंसिटिव। इसको हम दोनों तरह से लें कि अगर हम एक हाई एज वाली मदर को केटर कर रहे हैं तो 30% तो हम तभी मान के चल रहे हैं कि ये हाई रिस्क है एन्यूप्लॉयडी के लिए। दूसरा ये कि अगर हम उसको एक एस्टिमेट दें कि भाई तुम्हें कितना रिस्क है एन्यूप्लॉयडी का, तो सिर्फ 30% ही सेंसिटिव है। बट वी शुड रिमेंबर दैट एज द एज इज एडवांसिंग एज इज शोन इन दिस स्लाइड, rate of miscarriages are also increasing, all chromosomal risk are also increasing, and Down's risk is also increasing. 45 पे हर 30 प्रेगनेंसी में एक को रिस्क है और 20 की उम्र में हर 1667 प्रेग्नेंट पेशेंट्स में एक को रिस्क है। So these high age mothers are at risk of quite many things. And when we talk of why this voice is coming. So when we talk in context of aneuploidies, it increases with maternal age. तो ये जो maternal age है ये हमारा background risk है. See, this is unmodifiable risk. If you are seeing a patient who is getting pregnant at 45, 40, can you change that? You cannot. So if somebody is pregnant at 35, 40, 45, we know that she's at high risk of aneuploidy, but you cannot change it. So this is non-modifiable risk. इस नॉन मॉडिफाइबल रिस्क को अब हम एड ऑन करेंगे कि ये मदर को दूसरी मदर से कितना ज्यादा रिस्क है। 30% तो हमें पता ही है कि हाँ बढ़ रहा है, सेंसिटिव है, बट बाकी की मदर से इसको डाउन्स का, एडवर्ड्स का, बचाव का कितना ज्यादा रिस्क है। तो ये एक बैकग्राउंड रिस्क हुआ, उसका एज फैक्टर अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे बाय यूजिंग सर्टेन टेस्ट।
सो बैकग्राउंड रिस्क और ए प्रायोराई जो मैटरनल एज रिलेटेड रिस्क होता है, सी इट इज गिवन हियर ऑल्सो. सो आई हैव टेकन एज रिस्क ऑफ 35 to 45. सो इसमें देखो 35 पे द रिस्क इन मिड ट्राइमेस्टर एंड एट टर्म चेंजेस. 35 पे मिड ट्राइमेस्टर में डाउन का रिस्क 1:250 है, बट टर्म पे डाउन सिंड्रोम का रिस्क 1:385 है. और एन्यूप्लॉइडी का रिस्क भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतना ही. 45 पे यही डाउन्स का रिस्क मिड ट्राइमेस्टर 1 पर 19 प्रेगनेंसीज हो जाता है, और एनीप्लॉइडीज का रिस्क 1 पर 12 पेशेंट्स प्रेगनेंसीज हो जाता है. So this background risk, we should remember, we need not remember this data, but essentially what we have to remember कि हर 2 से 3 साल में रिस्क काफी कंपाउंडिंग रेट्स पे बढ़ जाता है. 10 साल में ही 250 से 20 हो गया. So it is quite high. Now at age less than 35, these detection rates are lower by 10%, and at age more than 35, detection rates, false positive rates were high. And these 90 to 95% sensitive, like I'll explain this particular statement afterwards. So maternal age, I'm sure it must be clear to you. This is the background non-modifiable risk which every pregnancy carries of having aneuploidy. So how do we modify it? We do certain other tests और उसको maternal age के साथ मिला के बता देते हैं कि इसका ज्यादा है या कम है. So that is ultrasound marker. That is first thing that we do, and this forms a part of combined screening. तो combined screening में हमने क्या किया है? हमने कुछ बायोकेमिकल टेस्टिंग को, जिसको हम एनालाइट्स बोलते हैं, सीरम एनालाइट्स, और अल्ट्रासाउंड मार्कर को एक साथ टेस्ट कर लिया, और उन दोनों की टेस्टिंग के रिस्क को मैटरनल एज के साथ मॉडिफाई करके फाइनल रिस्क बताया कि ये प्रेगनेंसी एन्यूप्लॉइडी के कितने रिस्क पे है. सो फर्स्ट इज अल्ट्रासाउंड मार्कर, दैट इज न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी. It is the maximum thickness of subcutaneous translucent area between skin and soft tissue overlying the fetal spine at the back of neck. We do it from 11 to 14 weeks or 13 weeks 6 days. मतलब 14 completed weeks से पहले हमें करनी है. It is not an abnormality but a marker of increased risk. In itself ये नहीं है कि अगर न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी आपको कुछ भी दिख गई तो वो abnormality है. It is normally there. वो इंक्रीज होती है तब it is a marker of certain other disorders including Down syndrome. इसका डिफरेंशियल क्या है? मतलब न्यूकल जो ट्रांसल्यूसेंसी एरिया है वो बढ़ गया. तो फर्स्ट डिफरेंशियल इज सिस्टिक हाइग्रोमा, बट सिस्टिक हाइग्रोमा इन इटसेल्फ इज अ एब्नॉर्मैलिटी. और अगर सिस्टिक हाइग्रोमा किसी फीटस का दिखता है तो अपार्ट फ्रॉम क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडीज, दिस फीटस इज हैविंग 5-fold increased risk for other kind of aneuploidies also. Then increased NT is a marker for aneuploidy, is a marker of fetal cardiac abnormalities also. More than 3 mm or more than 99 percentile is an isolated independent marker for aneuploidy risk. And its risk increases with degree of thickness. मगर हमें क्या करना है कि more than 3 mm at 11 weeks and more than 3 mm at 13 weeks is not same. So we have to see gestational age specific nuchal translucency marker. और ये they are nobody remembers them, but ये automated charts होते हैं कंप्यूटर पे एंड अल्ट्रासाउंड मशीन में. सो उसमें दिया हुआ होता है कि ये इस जेस्टेशनल एज के लिए नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है. And we have to follow strict FMF guidelines while we measure NT. So there are certain, I think 9 or 10 pointers and markers which a sonologist or obstetrician who is doing this ultrasound has to remember. Until unless those planes and those areas are fulfilled, that we cannot say that NT is increased. Otherwise, हर कोई increased NT या decreased NT पे आने लगेगा. So you have to train yourself before you go on for doing an NT ultrasound. अगर elevated है तो what do? We first and foremost to inform patient. After that, we allow them to have a target scan. We risk for cardiac anomalies, as I just mentioned, कि cardiac anomalies के chances ज़्यादा हो जाते हैं. Fetal echo should be advised to these patients. Now, assume one patient जिसका NT बढ़ा हुआ तो आया,
लेकिन आपने दूसरे टेस्ट कराए और उनको मॉडिफाई करके उसको एक लो रिस्क प्रेगनेंसी आ गई, still fetal echo should be advised in all the patients who are having an increased NT at the time of first trimester screening. Genetic counseling can be offered, and cell-free fetal DNA can be offered as a secondary screening. So by now, maybe I have that answer. There is no answer. Uh, Meeting will end in 10 minutes. You can rejoin with the same link. And two-thirds of Down's cases can be detected using NT. And if we have a twin pregnancy जहाँ पे serum based testing is not that accurate, वहाँ पे हम सिर्फ NT को measure करके पर fetus risk दे देते हैं. वो MCDA और DCDA twins में अलग होती है, and that is not the concept to learn for today's lecture. So बार I am telling you there are certain serum analytes. What are those? One is serum free beta SCG, and it is elevated in down but lower in intrauterine fetal demise. Second analyte is PAP-A, which is lower in downs and lower in preterm pregnancies, fetus is at risk of fetal growth restriction, preeclampsia, and in cases of intrauterine fetal demise. And if we see PAP-A isolated in low levels, still we should be having close surveillance for this pregnancy, because agar इनको downs नहीं है, तो they can land into preterm labor, they can have fetal growth restriction, they can develop preeclampsia later on. ट्राइसोमी 18 एंड 13 में बीटा एससीजी पैप ए दोनों कम होते हैं. एंड लेवल्स जब हम मेजर करते हैं, हमने एक प्रेग्नेंट मदर का ब्लड लिया और उसमें फ्री बीटा एससीजी और पैप ए के ये लिए वैल्यूज लिया, कितना आ गया. ये जो वैल्यूज का लेवल है, अब इसको हम मॉम्स में कन्वर्ट करते हैं. सो व्हाट इज मॉम? We should understand higher the mom, more the risk, but never ever in isolation. So mom क्या हुआ? Suppose एक मीडियन ऑफ पॉपुलेशन का 12 वीक्स पे पैप ए का मीडियन जो वैल्यू है वो 30 है. सपोज एक पॉपुलेशन हमने 100 लोगों की आइडेंटिफाई की और 12 हफ्ते पे उन 100 लोगों का पैप ए डिटेक्ट किया, तो उनका एक मीडियन जो लेवल निकल के आया वो 30 निकल के आया. किसी का 29 हो सकता है, किसी का 32, किसी एक्सट्रीम का 12 हो सकता है, बट जो मीडियन है वो 30 है. आपने जिस पेशेंट को टेस्ट किया, सपोज उसका वैल्यू निकल के है 60. सो अब मल्टीपल ऑफ मीडियन कितना हुआ, ये 60. तो पेशेंट का जो रिजल्ट आया और पॉपुलेशन का जो मीडियन है उसको हम डिवाइड कर देते हैं. तो पेशेंट का रिजल्ट इस केस में 60 आया और पॉपुलेशन का जो मीडियन है वो 30 है. तो यहाँ पर इसका मल्टीपल ऑफ मीडियन 2 आया, जो एक नॉर्मल सिंपल मैथ से भी वैसे आपको समझ में आ सकता है, बट द रिजल्ट्स आर सो easy that you can convert it, but otherwise they're not that easy. So ये अब हमें समझ में आ गया कि this particular result is 2 multiple of median, यानी इस मीडियन का 2 मल्टीपल इस पेशेंट का रिजल्ट है. तो ये तो ऑब्वियस है, पॉपुलेशन का मीडियन 30 है, पेशेंट का 60 आया, तो इसका मल्टीपल ऑफ मीडियन 2 हुआ, मतलब ये ट्वाइस द रेंज ऑफ मीडियन ऑफ दैट पॉपुलेशन. So result is 2 times higher than normal level of that population. So that is why it is essential to convert in multiples of median, because multiples of median, अगर आप single isolated value पे जाएंगे, you cannot predict because there are ranges for everything. So yes. अब आ गए हम कंबाइंड टेस्ट. तो अब हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए. पहला है मैटरनल एज, सेकंड है अल्ट्रासाउंड में न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी, और थर्ड है फ्री बीटा एचसीजी और पैप-ई यानी कि सीरम मार्कर्स. सो अब हम इन सबको कंबाइन करके एक स्क्रीनिंग का रिजल्ट बनाएंगे. प्लीज रिमेंबर, मैटरनल एज अलोन, एनटी अलोन एंड सीरम बीटा एचसीजी एंड पैप-ए अलोन, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, एक्सेप्ट कि मैंने जो समझा है, जैसे अगर एनटी बढ़ा हो तो उसमें आप कार्डियक एनामलीज भी देखिए, और अगर पैप ए एलिवेटेड हो या ज्यादा कम हो तो उसमें आप एफजीआर वगैरह के लिए मॉनिटर कीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट स्क्रीनिंग में इसका कोई बहुत रोल नहीं है. सो व्हाट डू? वी टेक रिजल्ट्स ऑफ सीरम एनालाइट्स, वी टेक जेस्टेशनल एज स्पेसिफिक एनटी, we
calculate a composite likelihood ratio. Again, it is a calculator based calculation. We don't have to do it sitting at our homes. तो ये कॉम्पोजिट क्योंकि दोनों को मिला के हुआ लाइक्लीहुड रेशियो कि कितना लाइकली है वो एक रेशियो हमने बना लिया और इस लाइक्लीहुड रेशियो को we will be using to modify the background risk of maternal age. So what is this is from one of my patient during COVID. She consulted me through online platform and she sent me a result where you see PAP A level was 0.55 multiple of median. Free beta SCG was 2.55 multiple of median. तो एज मैटरनल एज थी कहाँ कुछ लिखी होगी यहाँ पे 35 ईयर्स राइट. सो अब हमने देखो यहाँ पे रिजल्ट को किस तरह से इंटरप्रेट करना है. बायोकेमिकल T21 यानी कि डाउन्स का रिस्क सिर्फ बायोकेमिकल बेस्ड यानी कि पैपे और बीटा एससीजी बेस्ड रिस्क का काफी हाई आया है, दैट इज 1:56. खाली एज का रिस्क एस्टिमेट करो तो वो 1:351 आया राइट. इसमें क्या मिसिंग है अभी. We have biochemical and we have age. So what is missing is nuchal translucency. So nuchal translucency is given at 1.4 millimeter. So NT का mom जो हुआ उसमें multiple of median is 0.92. So in isolation अब वो patient बहुत घबरा गई. उसने she was my classmate sister. She called me. She said कि I am having this biochemical T21 risk very high 1:56 and somebody advised her termination of pregnancy based on this. So I said cool it down. अभी हुआ नहीं है. You have to take everything in combination, then only the result can be interpreted. So अब आप इसका रिजल्ट देखो. इन्होंने अलग अलग दिया है यहाँ पे. एज रिस्क, बायोकेमिकल 221, कंबाइंड ट्राइसोमी 21 रिस्क एंड 1318 रिस्क. So finally trisomy 21 का the calculated risk is below the cutoff which indicates a low risk. यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि प्रेगनेंसी लो रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ हैविंग डाउन सिंड्रोम है. तो भी आइसोलेटेड फाइंडिंग्स के बेसिस पे somebody advised her not even a diagnostic testing termination of pregnancy. So what I mean to say from this is कि कोई भी इन तीनों चीजों में से आइसोलेशन 45 पे कोई पेशेंट आई आपने सोचा कि इसमें तो बड़ा हाई रिस्क होता है चलो इसको तो MTP कर दो या इसको एडवाइज अगेंस्ट प्रेगनेंसी करो. नो, फर्स्ट वी हैव टू ऑफ स्क्रीन में अगर हाई रिस्क आए देन वी हैव टू कंफर्म. सो स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट. सो वी हैव टू कंफर्म एंड देन फाइनली वी हैव टू counsel the patient according to the confirmatory, that is diagnostic testing result. So we have one more baby in the bag, that is NIPT. NIPT क्या होता है? NIPT is non-invasive prenatal testing and we do it from cell-free fetal DNA. कब से कर सकते हैं? 9 वीक से. जो fetal cells हैं derived from placenta and fetal cells, or cells from originating from fetus body, they start circulating in maternal body quite earlier also, but 9 weeks पे अच्छे detectable levels हो जाते हैं. कब तक कर सकते हैं आप? करने को उसको टर्म तक करिए, but it should be having a valid indication. अभी फिलहाल हम उसको सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं. We can get the results as early as 1 week. ये कहाँ से आ रहे हैं? These are nothing but apoptotic trophoblast cells and they give us valuable information about the fetal genetic chromosomal and genetic composition. A minimum of 3 to 4% is required, ideally 3 to 13%, and the level depends on maternal weight, number of fetus, gestational age, medicines, race, etc. So we have to be very cautious while interpreting these results, and this essential information has to be provided to the lab. And mosaicism is a real problem in NIPT, although cells from maternal origin, जिसको maternal cell contamination बोलते हैं. So, but what you have to understand right now here is that cell-free fetal DNA can be used as a screening test. क्योंकि उसमें डायरेक्ट फीटस की सेल्स दिख रही हैं, उसी को आप स्क्रीन कर लीजिए, रादर देन गोइंग कि उसका बायोकेमिकल मार्कर बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, या अल्ट्रासाउंड में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो व्हाट हाउ डू वी डू 3 types of assays for these fetal cell DNA.
इस डीएनए को हम या तो मैसिव पैरेलल सीक्वेंसिंग से एम्पलीफाई कर लेंगे, या टारगेट सीक्वेंसिंग से एम्पलीफाई करेंगे, या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म से एम्पलीफाई करेंगे. एंड द फायदा विद एसएनपी इज वी कैन आइडेंटिफाई ट्रिप्लॉइडी कॉल्स. तो सेंसिटिविटी देखिए आप यहाँ पर डाउन्स के लिए 99% सेंसिटिव है और स्पेसिफिक 99.9% है. 13